नमस्कार आपण मानक समस्त को यही वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। तो आज यही वीडियो रे मु आपण मानक सहित राइट डाउन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोशलिज्म रो मीनिंग आ तार फीचर्स रो लॉन्ग क्वेश्चन टी आपण सह शेयर करबी आ वीडियो रे आगो को कहबी जे आपण माने यार पीडीएफ बा नोट्स टी को किपर भाबे पाई परबी। तो चलंतु स्टार्ट करबा। सोशलिज्म as a theory of state activities came to eradicate the evils associated with the free competition and private property under the individualistic order of the 19th century। तो 19th century स्टार्ट होता है। तो सोशलिज्म समाजवाद जो थ्योरी बा सिद्धांत से गोटे कौन ना स्पेयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी गोटे स्टेट एक्टिविटी केम टू एराडिकेट टू द इविल्स एसोसिएटेड मान जो सब इविल रही गोटे संघ विथ द फ्री कंपिटिशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी under the individualistic order of the 19th century। Individualism gives rise to capitalism, which creates inequalities of wealth by dividing the society into haves and have not। तो सोसाइटी में आगु पढ़ते +3 फास्ट टाइम पढ़ते haves have not पढ़ते। तो सोसाइटी को दिवार भाग कराई जो कैपिटलिस्ट पीपल आ गोटे कौन जो आम सब जो वर्किंग क्लास पीपल haves and have not। The capitalist system is plagued by absence of planning and the presence of profit motives and which goes to exploit the poor gravely। तो कौन कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कैपिटलिस्ट सिस्टम रही सेटा कौन कर इज प्लेड बाय एब्सेंस ऑफ प्लानिंग एब्सेंस रोची जो थे कि कैपिटलिस्ट पीपल मानकर प्रॉफिट मोटिव रोची किंतु से पुअर मानक वर्किंग क्लास पीपल को एक्सप्लोरमेंट शोषण करती। इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक ऑर्डर केम सोशलिज्म। यार प्रोटेस्ट रे गोटे इकोनॉमिक ऑर्डर अच्छी ताकू समाजवाद सोशलिज्म कहा जाए। व्हिच एम्स टू प्लेसिंग ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर द ओनरशिप ऑफ स्टेट जहाँ कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओनर अच्छी ताकू कैपिटलिस्ट न करके से कौन करते समाज को करदे माने पूरा स्टेट को करदे। which will regulate economic competition and eliminate the profit motive। According to socialist, the state is not evil but a positive good, and so the state must be opted with the widest power। All the means of production should be owned by state। State ही सब own करिबो माने मालिकाना नबो। State alone can bring maximum material benefits to the people। It is the state alone that can equally distribute the national income among all the people, so the trust of socialism from each according to his capacity and to each according to the quantity and quality of the work put in। The main tenets of socialism are 6। तो सोशलिज्म कौन 6टी मेन जो टेंट अच्छी से गुड़िक कौन कौन ना it aims to replace competition by corporates and thus prevents all waste and losses। तो ये कौन आर मुख्य उद्देश्य होची जो कॉर्पोरेटर मानकर जो कॉर्पोरेशन जो रही जो कंपटीशन ताको रिप्लेस करके दोज प्रिवेंट ऑल वेस्ट एंड लॉसेस को ये करबो। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश ए सिस्टम आ गोटे सिस्टम को एस्टैब्लिश करबो जहा कि प्लेन इकोनॉमी इन व्हिच द नीड्स ऑफ पीपल एसेट एंड प्रोडक्शन इज प्रॉपर्ली एडजस्ट टू मीट द नीड्स। It aims at our लक्ष्य at eradication of inequality of wealth by equitable distribution। आ जो eradication माने कौन जो inequality अच्छे अर्थनैतिक क्षेत्र में ताकू दूर करिके अर्थनैतिक क्षेत्र में जो असमानता रही ताकू दूर करिके समस्त मध्य कौन इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम सरकार वेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास आ सब कड़ा जो कैपिटलिस्ट पीपल मान रही क्लास रही से जो पुअर मान वर्किंग क्लास पीपल को एक्सप्लोट कर प्रिवेंट कर एंड कौन ना इट वांट्स टू रिप्लेस द प्रॉफिट मोटिव बाय द ऑफ सोशल सर्विस एंड सोशल गुड्स। आर मुख्य उद्देश्य रहा मोटिव कौन रहा जो प्रॉफिट कम सोशल मोटिव्स को ताकू न हटे हटेकरी सोशल सर्विस एंड सोशल गुड्स प्रति आर मोटिव रहा।
it places all means of production under the ownership of state आरो कौन करियो जो ओनरशिप होइछि प्रोडक्शन रो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रो ओनरशिप के प्लेस में पीपल बाहर होइछि किंतु ताको स्टेट को दिया जिवो नेक्स्ट इट guarantees to pay everybody according to the quantity and quality of his work आउ एटी गारंटी दबो जे जिलार जति क्वालिटी दबो ताको से हिसाब रे से क्वांटिटी मिलिबो नेक्स्ट देखिए फीचर्स ऑफ सोशलिज्म तो आप पूर्व में देखले टेंसटा जति इंपोर्टेंट हो किंतु फीचरटा इंपोर्टेंट परीक्षा आसी पारे तो फीचर्स ऑफ सोशलिज्म कोन द मेन फीचर्स ऑफ द सिस्टम आर डिस्क्राइब अंडर माने आ जो फीचर्स ऑफ सोशलिज्म रो ताको हम बर्तन डिस्कशन करबा तो फर्स्ट होची पब्लिक ओनरशिप तो पब्लिक ओनरशिप कोन ना फर्स्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इज सोशलिस्ट इकोनॉमी व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द पब्लिक ओनरशिप तो फर्स्ट हैला कोन ना जहाँ सब रहइबो ताहा सब पब्लिक ओनरशिप रहइबो स्टेट ओनरशिप रहइबो स्टेट माने पब्लिक ओनरशिप रहइबो all of means of production and distribution there is a head ownership whereby all mines farms factories and financial institutions and regulated by government departments and state corporations आ जहाँ सब कौन ना सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो कि स्टेट कॉर्पोरेशन से कौन रेगुलेट हो ए स्मॉल प्राइवेट सेक्टर आल्सो एग्जिस्ट और द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स व्हिच आर कैरिड ऑन दिस विलेज बाय लोकल आर्टिस्ट फॉर ए लोन कंजप्शन आ समस्त गोटे लोकल लोन मिलिबो जहाँ से कौन स्मॉल इंडस्ट्री बिजनेस करें नेक्स्ट कौन रही ना सेंट्रल प्लानिंग तो सेंट्रल प्लानिंग करे तो सेकेंड फीचर ऑफ सोशलिज्म इज सेंट्रल प्लान व्हिच फंक्शन जहाँकि फंक्शन करें कौन ना अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इट डेवलप्स वेरियस ऑब्जेक्शन एंड टारगेट्स टू बी रियलाइज्ड ड्यूरिंग द प्लान पीरियड में सब को डायरेक्शन देवा कि डेवलपमेंट करबा इकोनॉमी को ताको से गुरुत्व देवा सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट एंड हाउ मच इज बी प्रोड्यूस जो प्लानिंग हम केबे हो ना केबे है प्रोड्यूस हम हाउ व्हेन वेयर इट प्रोड्यूस माने कितळ केउंटी है प्रोड्यूस हम टू हुम इट इज टू बी अलोकेट बाय द मीनिंगफुल डिसीजन अब कि है को माने का दिया जीव जे हां तुम नहीं परियो डिसीजन ऑफ डिटरमाइनिंग अथॉरिटी The central planning authority organize and operates the financial resources by deliberate direction and control the economy. So सब direction दबो तासे इकोनॉमी मध्ये कंट्रोल करबो. नेक्स्ट कोन है डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्स. तो डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्स कोन ना another characteristic of socialism is that a socialist economy operates within definite socio-economic objectives. These objectives may function aggregate demand, full employment and satisfaction of communal demand, allocation of factors, production, distribution of the national income, the amount of the capitalist national income, the amount of capitalist acquisition, economic development and so forth. सब प्रकार सब हम नेक्स्ट कौन रही है फ्रीडम ऑफ कंजप्शन. तो फ्रीडम ऑफ कंजप्शन कौन पढ़ा ना फ्रीडम ऑफ कंजप्शन आम पढ़ा जे इन सोशल सिस्टम कंज्यूमर्स डोमिनेंस infrastructure production in state owned industries is generally governed by the government by the kings and consumers and the available merchandise are distributed to the customers at a fixed price. The state run development stores आ कौन हम ना consumers dominion under the socialism is limited to the choice of socially beneficial and commodities. Next पढ़िया कौन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कौन ना इन ए सोशल सिस्टम सोशल सिस्टम रे देयर इज ग्रेट impartiality of income distribution in comparison a free market economy. The removal of private ownership in the means of production जो private ownership रही means of production ताको remove करा जिवो. Private capital acquisitions and profit motive under socialism above the approval of the large wealth in the hands of the few wealthy person. किछि wealthy person को ताको दिया जिवो जहा कोन इक्वली ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो. एरो गोटे फीचर्स को अन्य गोटे फीचर सोशलिज्म रो. नेक्स्ट होछि कोन ना प्लानिंग एंड प्राइसिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग करबा केते प्राइस रखिया तार प्रक्रिया कोन ना अदर फीचर ऑफ सोशलिज्म इज दैट द प्राइसिंग प्रोसेस under socialism does not operate autonomously but works under the control and regulation of the central planning authority. There are also the market price at which consumer goods are sold. गोटे मार्केट प्राइस थाए केतेबेले से जो उपभोक्ता से जो कंज्यूमर टाको कोन किन बिकंती बा किनंती.
There are also accountings priced on the basis of which managers and investment goods and decide to about production जोदि कि मैनेजर मैंने कौन डिसाइड करते प्रोडक्शन केवल कौन करबा प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड आल्सो अबाउट द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स इट पर्पज ऑफ पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ कि देखा जे कौन ना एटा पर्पज कहार ना पब्लिक ओनरशिप रो पर्पज नेक्स्ट बर्तमान देख कौन कौन क्रिटिसिज्म ऑफ सोशलिज्म रो क्रिटिसिज्म माने समालोचना किबरे करा जाय सोशलिज्म को The following is some of the attacks against socialism. First, in a state-controlled system, there will be lack of initiative and efficiency in the work of people. People are initiative रहबनी, efficiency रहिबो work रे. People are likely to work more sincerely where there is initiative for personal benefits and gains. और कौन रहबो ना socialism will reduce the human beings into so many knots and bolts in a machine और सोशलिज्म कौन रिड्यूस कर दो ह्यूमन को जे कौन सो मेनी नट्स एंड बोल्ट्स गुड मशीन रहबो सेकेंडली कौन माने सेकेंड रहबो सोशलिज्म मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंट एंड द इडियट्स which is bound to produce gross injustice to all. सोशलिज्म कौन डिफरेंस जानि परिबनी जहा कि इंटेलिजेंट और कि इडियट जहा कौन करबा ना which is bound to produce gross injustice जहा कि injustice को प्रोड्यूस करबो to all. Socialism does not recognize the extractivism of few who should be given a better treatment in the bounds of state. The society is bound to suffer in such a system. Thirdly, if the state takes over all the means of production, it may tend to become authoritarian and bureaucratic, which will result in corporation inefficiency, interest and taxation. So socialism cannot be a panacea of the ills of a capitalist society, but will become a prairie for all that it wants to eradicate. Fourthly, fourthly, socialism by lightening in noise round the neck of individuals will create a new slavery. One new slavery सृष्टि हो जहाँकि मॉडर्न एज रे. In his book Read to Sarfredom von Hayek से लिखिछन जे asset that socialism will regiment human thought and action, even make every individual a slave of a community. और जहाँ सोशलिज्म कौन करिवो लास्ट को प्रत्येक जो हमर जो कम्युनिटी रही यही कम्युनिटी रे प्रत्येक इंडिविजुअल गोटे स्लेव माने गोटे चाकर ही रहिबा गुलाम ही रहिबो. देखले सोशलिज्म रो हम देखले टेंस फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट टाइम आपन मन सहित सोशलिज्म रो टाइप्स केते प्रकार कोन कोन आपन से डिस्कशन करबी. रही परी वीडियो पे चैनल एडी हंतु जदि आपन माने नोट्स चाहंती त डिस्क्रिप्शन रे मो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देबी सेतिर आपन जाई कि यार मोस्टली पाइबे. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.